हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये सफ़र है फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून और ये मैं आपको पूरे इसमें दिखाऊंगा। तो ये जो है ये एक्सप्रेस वे का नहीं है, जो भी नया एक्सप्रेस वे भी बनने वाला है। चूँकि अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ ये अगस्त 2025 है। एक्सप्रेस वे अभी कुछ टाइम बाद खुलेगा दिल्ली देहरादून वाला। तो अभी मैं जो ओल्ड रास्ता है इसका दिल्ली से मेरठ, देन मेरठ से देहरादून का जो रास्ता है मैं उसको कवर करके ये आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत अच्छा है, आप एंजॉय करोगे। और साथ साथ बन के मैं देहरादून में इसको स्टॉप करूँगा। तो बी विद मी, देखते रहिए आप।
दोस्तों आ गया हूँ मैं सरोवर प्रीमियर होटल देहरादून में। मैं आज यही स्टे करूँगा नाइट में। और यहाँ पे मैं एक बार पहले भी रुक चुका हूँ, 2 साल पहले आया था। तो अभी मैंने यहाँ स्टे कर लिया है, रूम को चेकआउट कर लिया है। मैं अभी आपको रूम का भी टूर कराऊँगा। तो चलते हैं इस होटल के अंदर। आज रात का स्टे मेरा यहीं पे है और फैमिली के साथ मैं आया हुआ हूँ। और इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। आप ये ऊपर बादल देखो, काले काले एकदम बारिश वाले बादल हैं। थोड़ी बारिश अभी हो भी रही थी, अभी रुक गई है, बट काफ़ी अच्छा मौसम है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। चलते हैं इस होटल के अंदर। चलिए आपको अंदर रूम दिखाता हूँ मैं। तो ये था सफ़र मेरा दिल्ली से देहरादून तक का। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और मेरा नेक्स्ट टूर होगा मसूरी का, वो आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू।